Rabi Yahudi izinkan, tentara Zionis memperkosa tahanan Palestina. Tokoh agama dan politik terkemuka Yahudi, Israel, Rabbi Meir Mazus, secara terang-terangan mendukung tentara rezim Zionis terlibat melakukan aksi pemerkosaan dan penganiayaan terhadap tahanan Palestina. שיגדל הבן בעזרת השם, וגיבור חי ולא יפחד מהגויים. אמן. בתורה כתוב, לא תיראו, אל תפחד מהאום. אמן, אמן. מאז פרוץ הפרשה, הרב מזוז תומך ומעודד את החיילים החשודים, ומייעץ לעורכי דינם. אחד הפרקליטים אומר לי, תקשיב טוב, עורך דין דמרי, אפילו אלוקים לא יצליח לשחרר אותם. אני שואל אותו למה. אומר לי, תקשיב טוב, הבית הלבן, ביידן, מעורב בתיק, לא ישחררו אותם. ואז אני התקשרתי לרב. הרב הראה לפרקליטים שאנחנו יודעים לעשות ניסים מעל הטבע, שהרב יודע לעשות ניסים מעל הטבע, שהברכות של הרב זה מעל הטבע. אתה הרב, אתה מנהל את הכל. אנחנו בלעדיך לא זזים סנטימטר, הרב. במהלך הפגישה, עורך הדין מסביר כיצד ניסה להוכיח את חפותם של החיילים החשודים. הבאתי חוות דעת רפואית, אחד מהרופאים הפרופסורים הגדולים בעולם. זה הפרופסור שניתח את ראש הממשלה. קוראים לו פרופסור אלון פיקרסקי. והוא הביא חוות דעת רפואית שאותו מחבל נוח'בה שקרן. אז הוכחנו שמה שהוא אומר זה שקר. ומה היה אמת? אין לנו זכות לעשות ככה. נכון, הרב צודק. מותר לנו להגן על עמנו ועל כבודנו. Menurut kantor beritakan, Rabbi Mazus, yang memiliki pengaruh besar dalam politik, Israel, dan komunitas Haredi, bertemu dengan para tentara yang terlibat dalam penjara Sde Teiman yang terkenal di Gurun Negev. Dalam sebuah video yang beredar, para tentara tersebut telah terekam sedang memperkosa seorang tahanan dari Gaza. Dalam pertemuan tersebut, sang Rabi terlihat memberikan restu kepada salah satu tentara yang terlibat dalam aksi pemerkosaan. Dalam sebuah pembicaraan Rabbi mengatakan, "Kamu akan dibebaskan sepenuhnya. Apa yang sedang kamu lakukan adalah menyerang musuh. Lalu apa masalahnya? Semuanya baik-baik saja," katanya. "Di negara lain manapun, kalian akan diberikan penghargaan," kata Rabbi Mazus seperti dikutip Quds News hari Ahad. Rabbi Mazus, berasal dari Tunisia, adalah salah satu rabi paling berpengaruh di antara komunitas Haredi dan dalam politik Israel. Keputusan dan pendapatnya memiliki bobot yang cukup besar di kalangan pembuat kebijakan dan kaum Yahudi. Para menteri tingkat tinggi dan anggota Knesset, termasuk Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, diketahui sering meminta nasihatnya. Insiden pemerkosaan brutal dan sadis ini terungkap setelah video yang bocor, memperlihatkan tentara Zionis memperkosa seorang tahanan Palestina di Sde Teiman. Rekaman tersebut ditayangkan oleh Channel 12, menggambarkan tentara cadangan memilih seorang tahanan dari sekelompok lebih dari 30 tahanan yang ditutup matanya dan membawanya ke daerah terpencil, menyiksa mereka dan menggunakan perisai untuk menyembunyikan tindakan mereka. Video yang tidak bertanggal dan tidak diketahui tersebut menunjukkan upaya tentara yang terlibat untuk menyembunyikan tindakan mereka dari rekaman kamera keamanan. Sebelumnya, di bulan Januari, Rabbi Meir Mazus di Pangkalan Militer Shura, di acara yang diselenggarakan oleh Kepala Rabi Militer Eyal Krim, ia juga mendukung aksi pemerkosaan, dengan dalih bahwa orang Yahudi boleh memperkosa orang non-Yahudi karena Taurat mengizinkan individu untuk memuaskan dorongan jahat. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah kelima tentara Zionis yang terekam kamera memperkosa tahanan Palestina itu? Apakah kelimanya terbebas dari hukuman penjara karena dapat dukungan dari Rabbi Mazus? 5 tentara Israel yang ruda paksa tahanan Palestina dibebaskan, Menteri Zionis dukung hak memerkosa. 5 tentara cadangan yang menjadi tersangka pemerkosaan di Pangkalan Militer Sde Teiman, Israel, dibebaskan dari tahanan dan dikenai tahanan rumah per Selasa, 13 Agustus 2024. Pembebasan tersangka ini dilakukan otoritas Israel seiring munculnya gerakan yang menuntut hak memerkosa tahanan Palestina. Investigasi militer Israel terhadap tentara yang menyodomi tahanan Palestina di kamp penahanan Sde Teiman dimaksudkan untuk melindungi Israel dari tuntutan pengadilan internasional. Kantor pengacara militer Israel dan pengacara pembela sepakat untuk membebaskan 5 tentara yang dituduh memperkosa seorang pria Palestina di kamp penahanan terkenal Sde Teiman, Haaretz melaporkan pada 13 Agustus.
Juru bicara militer Israel mengatakan kelima tentara tersebut akan dibebaskan ke tahanan rumah selama 10 hari, dan selama periode ini, mereka akan dirujuk untuk ditinjau oleh Dinas Percobaan. Di akhir penyidikan minggu depan, akan digelar prosedur pemeriksaan terhadap para tersangka, sama seperti yang dilakukan sebelum pengajuan dakwaan. Pengacara dari pembela militer berpendapat bahwa tahanan rumah tepat bagi para prajurit, karena waktu yang dibutuhkan untuk meninjau kasus tersebut, dan karena para prajurit tidak menimbulkan ancaman bagi masyarakat. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah kelima tentara Zionis yang terekam kamera memperkosa tahanan Palestina? Apakah kelimanya terbebas dari hukuman penjara karena dapat dukungan dari Rabbi Mazus?